We've all walked past the streets of Mumbai to notice this. And now that the state assembly elections are approaching, political campaigning is going to skyrocket. Hi, I'm Neha and welcome to Logically India's YouTube channel. While a lot of activists in India call out illegal political hoardings and posters, the netizens haven't kept mum about what they truly feel of illegal political hoardings. But here's the thing, illegal political hoardings aren't just visually unattractive to look at. They have serious implications. In fact, this September, a woman died after a hoarding crashed into her, causing her to fly off her scooter and get trampled under a water tank. And the worst part, not only was the hoarding illegal, but it belonged to an AIADMK councillor Jay Gopal, and the hoarding was about his son's wedding announcement. And moreover, similar cases of death due to hoardings have occurred at multiple occasions in the past. Illegal hoardings have been a menace since ages. The first PIL was filed around roughly in 2010 by one of the first judicial activists and petitioners, Bhagwanji Irani. And 2 decades from then, it is still an ongoing matter. The activist argument can be summed up under 3 points. 1. That illegal posters have a huge potential of causing casualties in the future. 2. They are dubious in nature in terms of their funding. And 3. They are visually unappealing posters with sometimes irrelevant information like birthday wishes or anniversary wishes, which are being pushed into people's faces, or simply put, visual pollution. Despite illegal hoardings being banned by the High Court, the activists argue that the civic bodies and the Election Commission is very negligent when it comes to illegal political hoardings and holding the perpetrators accountable. However, if we were to look at the other perspective, Mumbai earns a considerable amount of revenue only through advertisements and billboards. In fact, the license department of the civic body says that Mumbai earns an estimated 50 lakhs per annum only through political advertisements and billboards. According to the data available by the BMC, the MMRDA, the MSRDC, and the PWT department, Mumbai has an estimated 3,600 hoardings in the BMC area. 50% of this is reserved for corporate clients, private companies, and social messages from the government. And the other 50% is reserved for bright outdoor media, global advertisers, and 3 other companies in Mumbai. But none of this revenue is accounted from illegal political hoardings. So in retaliation to the activist claim of the BMC not imposing stricter regulations against the perpetrators, the BMC says that some politicians are unaware of their own pictures being used for these political hoardings. And surprisingly, civic body workers fear political backlash and harassment from political goons when they take action. Last year, BJP government spent around 500 crore rupees only on advertisements, which includes print and TV advertisements as well as hoardings. Then, Mumbai-based RTI activist Anil Galgali revealed information from the Centre's Bureau of Outreach and Communication that the Modi government has so far spent 4,300 crore rupees on publicity alone, which includes outdoor advertisement, print, and digital media. Which brings us to some questions. 1. Where do political parties get the funding for such hoardings? Is it the taxpayers' money? And if it is, how is it legally permissible? 2. What are the legalities involved in billboards and hoardings? And lastly, what are the implications of having such hoardings? To dwell deep into this matter, we got in touch with a few RTI activists. So, Mr. Nikhil, I am thoroughly impressed with your work on illegal political hoardings and whatever you've done as an RTI activist. There have been so many in this city. So, I've always wondered, what is the procedure of having these hoardings up? Do they just appear in the night, or is there a legal process of happening? There are legal and illegal. The legal hoarding has got a designated locations decided by BMC and all. But our city, the problem is with illegal hoardings, and that too mostly political. Any festival comes, politicians and their supporters and followers, they will put say 100 hoardings in one area. Say Ganpati festival comes, they will put the leader's photo and their own photo and claim ke welcome to Ganpati and like that. So those hoardings are illegal. Illegal in the sense they are not paid for. No fees are paid. Just any railing or tree or the street light lamp post, on that they are loosely tied overnight. And for people to just next day morning they come and see all their faces
It is free publicity type thing, and there is no procedure being followed for illegal hoarding. So to put up these hoardings, is it the taxpayers' money that is being used? Like, what is the funding behind these hoardings? And if so, if the taxpayers' money is being used, how is it even permissible? In a way, it is taxpayers' money. When overnight some 100 hoardings are put by a politician in an area, after, for say, one festival which gets over after 2 days. After 2 days, when BMC needs to remove all those hoardings, they take 4-5 people, they take a van and they take a police bandobast and remove all those hoardings. That all cost, the salary and the petrol and the police bandobast, all cost goes in from taxpayers' money. But so otherwise it's not the taxpayers' money. You're saying the printing and putting it up, that is done by them. That is done by their own money. Right. But to remove it, remove it and all is our money being spent unnecessary. Right. We can use those money for repairing a footpath and all. तो अभी जो आपने RTI के प्रति करंट गवर्नमेंट का पब्लिसिटी एक्सपेंडिचर एक्सपोज किया था, विच इज़ अराउंड 4,000 करोड़, वो टैक्स पेयर्स का मनी है या कौन से सोर्स से मनी उन्होंने इस्तेमाल किया था इसके लिए? मोदी गवर्नमेंट ने जो पिछले 5 सालों में जो अलग अलग विज्ञापनों को जो पैसे खर्च किए, तो जो आंकड़े हैं 5,000 करोड़ से भी अधिक है। सरकार की तरफ से ये पैसे खर्च किए गए हैं, किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की तरफ से पैसे खर्च नहीं किए गए। जब हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो विज्ञापनों पर पैसे खर्च हुए थे, उसके आंकड़े भी जब RTI से निकाले, मोदी गवर्नमेंट के निकाले, तो हमें पता चला कि 10 गुना पैसे अधिक खर्च हुए हैं। अगर आपको इंडिविजुअल प्रचार करना है तो भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 5 सालों में जिस तरह से बेहताशा धन आया हुआ है अलग अलग फंडिंग के माध्यम से, तो उनके पास भी वो सक्षम थे कि इस तरह के पैसे खर्च करें। आज हमारे देश में विज्ञापनों पर कितने पैसे खर्च हो, उसका कितना बजट हो, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लिमिट बनाने की आवश्यकता है कि सरकार को 1 साल में या 5 साल में कितने पैसे खर्च करने का उन्हें छूट मिल सकती है। उन्हें विज्ञापनों पर कहीं ना कहीं तो कटौती करने की आवश्यकता है, ताकि टैक्स पेयर का पैसा यूं ही फिजूल खर्ची खर्च न हो। अभी ये जो होर्डिंग्स है ये BMC ही क्वालिफाई करते हैं ना, तो किस हिसाब से ये क्वालिफाई होते हैं? जब भी इस तरह की होर्डिंग आपको लगानी होती है तो महानगर पालिका का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिलअप करके उन लोगों की NOC लेने की आवश्यकता होती है। और उसके बाद म्यूनसिपैलिटी में ये भी नियम बनाया है कि जो भी कंटेंट है उसे आप प्रिंट आउट करके उस एप्लीकेशन के साथ जोड़ दें, ताकि कंटेंट्स कभी हमारे जो भाईचारगी हो या कोई सांप्रदायिक माहौल हो या कानून व्यवस्था को खतरा पैदा न हो। तो म्यूनसिपैलिटी का जो लाइसेंस डिपार्टमेंट होता है वो एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करता है, कंटेंट को देखता है, उसके बाद जो चार्जेस होते हैं वो भरने के लिए उन्हें चालान अदा किया जाता है। कई जगह पर इलीगल होर्डिंग्स बड़े पैमाने पर लगाई जा रही है। हमें लगता है कि इसकी परमिशन उन्हें मिल चुकी होगी, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिकल नेक्सस, म्यूनसिपैलिटी के ऑफिसर का नेक्सस और होर्डिंग्स के जो माफिया है जो मुंबई शहर में काम कर रहे हैं, वो ऐसे कई सारे साइट पर इलीगल होर्डिंग लगाते हैं। क्लाइंट से पैसा तो लेते हैं मगर वो पैसे सरकार को या म्यूनसिपैलिटी को अदा नहीं करते हैं। आज तक हमारे शहर में कितने लोगों पर FIR दर्ज हुई, कितने लोगों पर जुर्माना वसूला गया, उसका कोई डाटा ऑनलाइन म्यूनसिपैलिटी ने नहीं किया है। सरकार को 50 लाख रेवेन्यू मिलता है ओनली बिकॉज ऑफ होर्डिंग्स एंड एडवर्टाइजमेंट। ये जो पॉलिटिकल होर्डिंग्स का पूरा मामला है, इज इट गुड और बैड, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस? देखिए कि सरकार को और म्यूनसिपैलिटी को रेवेन्यू मिलना आवश्यक है, होर्डिंग्स लगाने की भी आवश्यकता है, मगर आप उस साइट को ऐसे चुनिए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और दूसरी बात है कि इलीगल होर्डिंग बड़े पैमाने पर मुंबई शहर में लगाई जा रही है। अगर किसी को होर्डिंग्स लगानी है तो उसको ऑफिशियली साइट पर उसे लगाने की परमिशन देनी चाहिए और उससे पैसे जो है वो डबल लेने चाहिए, क्योंकि आज के तारीख में जो वो लोग फीस ले रहे हैं काफ़ी कम है, उसके वजह से लोग बड़े पैमाने पर होर्डिंग्स लगा रहे हैं। एक पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है ताकि होर्डिंग्स भी लगे और सरकार को बड़े पैमाने पर मुनाफा भी हो और लोगों को सुरक्षा की गारंटी मिल सके। चाहे मुंबई शहर हो या पूरे देश में, होर्डिंग्स लगाना के खिलाफ हम नहीं हैं।
होर्डिंग्स लगनी चाहिए, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए, मगर वो रेवेन्यू और वो होर्डिंग से किसी की जान को अगर खतरा बनता है तो ऐसे होर्डिंग से हमें बचना चाहिए। Fake news is a big problem in India, and we here at Logically are working towards fighting it. It's very important for you to double check, sometimes even triple check information before you share it online. This is made easier with Logically's app, where you can verify any article or pictures that you see online. If you want more information about how Logically works and can help, check out the link in the description below. That's all we have for in today's show. I'm Neha Nambiar. Thanks for watching Logically India's YouTube channel. And until next time, always verify information before you share it online. Goodbye.